Like in a Vardi, there is no comparison with anybody Comparison else. at all. Sorry. Priyanka, how much more work Priyanka, is... I wanted to ask that did you watch Dilwale since I haven't even watched बाजीराव मस्तानी by the way. मुझे Forget अपनी about फिल्म भी देखनी है. मैंने कोई फिल्में नहीं देखी. मैं कल आई हूँ इस देश में. आज यहाँ हूँ. अभी गिल्ड अवार्ड्स जाऊंगी, परफॉर्म करूंगी. कल दिल्ली जा रही हूँ. I'm not here. I haven't even watched my film. The whole world is calling me and telling me काशी और मेरे को पता ही नहीं मैंने काम क्या किया है फिल्म में. It's quite stupid actually. सब बोल रहे तुमको शर्म नहीं आती तुमने फिल्म नहीं देखी. Priyanka, how much more work is here this side, right here? Roshni here from India. हाँ, found you, sorry. So I just wanted to check, will we see you rarely in the media also now because there's so much work happening here and abroad, and what are the projects that we can look forward to ahead? I am very restricted on time now. Yes, it is because Quantico was supposed to be 13 episodes and got extended to 19 and now it's 22 episodes. So it was not something I was prepared for, but it's obviously a really good thing also, which means it's become such a big hit. And it's gone global. We've dubbed it in 44 languages. It's gone to like 100 countries, territories. So it's extremely exciting, but at the same time, it restricts me. But it's a great problem to have because I have some wonderful scripts that I am vetting right now. And I will not be able to obviously do all of them, but I'll pick and choose the best that I can. Hi Priyanka, Hi. Preksha from Bollywood Masti. Hi. So you're representing feminism in this movie, and what learning did you go through? Because there's so much being talk about feminism and all that. So how do you like to represent it in this movie? I'm a very proud feminist. I'm someone who believes that feminism is just a conversation about equality. It is not about hating men or berating men or putting them down. It is just about talking that, for eons, women have been treated like second-class citizens, and it's high time that we are given the credit due. The fact that this film is being made, the fact that, and this talks about exactly that. I'm posted in Bankipur because I'm a woman, because elections are coming up, and people think that as a woman, I won't be able to do anything. This film is a testament to feminism, where it turns around and says, the last dialogue of the film, वर्दी का रंग अगर सही हो तो चाहे मर्द पहने या औरत तुम नामर्दों को अपनी औकात दिखा देती है. It's very simple. It doesn't make a difference. So we are talking about blurring the lines between men and women, and I'm an extremely proud feminist. So प्रियंका वैसे मैं इनको हमेशा एड्रेस कैसे करता हूँ आप लोगों ने सुना होगा मैडम सर. मैडम सर है मेरा नाम. फेमिनिज्म का एपिटमी. एपिटोम है. प्रियंका जी आभा का किरदार तो हमने समझ लिया है. ये काशी के लिए आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं? और दूसरा सवाल है कि प्रकाश जी की फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर हमेशा से बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ काम करने के लिए इच्छुक रही थी पहले से, जो आपने सामने से कहा कि वो मैं मिलना चाह रही हूँ आपसे? प्रकाश जी और मैं एटलीस्ट 4-5 साल हो गए हैं हम लोग बात कर रहे हैं फिल्म करना है. ये कौन सी फिल्म? बचपन से ही हम सोच रहे थे नहीं. काफ़ी टाइम हो गया. तो ये हम लोग का बैक एंड फोर्थ चल रहा था. तो फाइनली चांद जी जो यहाँ बैठे हैं, मेरे सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे बोला कि ये काफ़ी महीने हो गए हैं, ये मीटिंग करनी है. तो मैंने बोला इट्स रियली रियली ऑफुल ऑफ मी. तो मैंने फ़ोन किया प्रकाश जी को कि सर हम मिलना चाह रहे थे, प्लीज़ आप मुझे आओ तो सही मिलो. क्या मिलने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है. सर मिल तो लो, देख लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे. कहानी जब मैंने सुनी, और कोई नहीं कर सकता ये रोल मेरे सिवा. सो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट इट. तो हमने वर्कआउट किया, टाइम निकाल लिया, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद प्रकाश जी. आई एम टेलिंग यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू टर्न आउट टू बी द वे ही एक्चुअली डिड. ये बड़े सीरियस लगते हैं और सबको इंटिमिडेट करते फिरते हैं, लेकिन एक्चुअली रियली फनी है. सॉरी मैं आपका मिथ तोड़ रही हूँ, बहुत फनी है. एंड ही सो इंटेल. मेरा पूरा टीम हैज फॉलन इन लव विद प्रकाश जी बिकॉज ही इज सो स्मार्ट एंड फनी. आई एम रियली सॉरी, डोंट गिव मी एटीट्यूड, बट इट्स ट्रू. क्या हो गया? नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, तुम सब खड़े बैठे हो यहाँ पे. ही इज रियली फनी एंड ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ही शूट्स जैसे मतलब कोई बड़ी बात है ही नहीं. आए हम लोग काम करें, डायलॉग बोलो, चलो निकलो, आउट, फिनिश्ड. देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज नो एंड ही alone handles the entire unit, the entire production, one mic and him. Matlab 300 people will be over there, crowds of 500, but he alone will handle it. And it's a huge testament. He's a one-man army. And I'm very proud I got to work with him in this film. Kashi. प्रियंका प्रकाश जी, प्रकाश जी, प्रियंका I'll just finish his answer one second. बड़ी शर्म की बात है, बट बिकॉज आई हैवंट सीन द फिल्म, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आता. मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं. मेरा घर गार्डन हो गया है.
इतने फूल हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा बर्थडे है। आज मेरी मामी ने मेरी मासी ने मुझे फ़ोन किया, अमिताभ बच्चन के यहाँ से चिट्ठी आई है, एंड एज यूजुअल इन अमित जी स्टाइल ही राइट्स इन हिंदी ना, तो बड़ी एक्साइटेड हो गई थी माय मासी, माय बिहारी मासी जो प्रकाश जी की बहुत बड़ी फैन है। तो वही पढ़ सकते हैं हिंदी और क्या। वो पढ़ के शुद्ध हिंदी पढ़ के फोटो वोटो ली उन्होंने उसके साथ। इट वाज क्वाइट स्वीट, बट आई हैव गॉट some amazing compliments for this film. People I haven't spoken to for years, मैंने जिनसे बात नहीं की है, जिन्होंने शायद बट इतना आश्चर्यचकित मत होइए, आपने अच्छा काम किया है। सर, लेकिन मैंने ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था ना कि आई एम रियली वेरी आप आश्चर्यचकित। एक्सपेक्ट करना शुरू कीजिए, आदत डालिए। Priyanka here. जी, I'm sure you must be aware of the Miss Universe goof up that happened. What do you have to say about the scene? felt so bad. It's terrible. It's If that terrible. happened with me, I felt really bad. Died. I'm so It's sorry for you, terrible. Miss Columbia. It was really bad. Priyanka, also one more thing. There is a raging debate. काफी embarrassing है, sorry, but I couldn't get over it when I saw it. Okay. Priyanka, also. Okay. Priyanka, one more thing. There is a raging debate in the nation. If you would like to give an opinion, it would be really great. In the Nirbhaya case, the juvenile has been released, and people are saying that he should be retried as an adult. What's your take on the same? Well, I mean, it is something that is, I don't agree with it. I've always said that. I don't agree with it. And it's such a heinous crime. It's unforgivable. And I mean, I'm someone who's a law-abiding citizen, so I will go with whatever the law decides. But it was too heinous a crime for it to be. The forgiven. law considers and sort of like, him to be a juvenile. It's so unfortunate that it has become a case of child versus woman. It is so unfortunate. Because, we do understand the issue of reform, the issue of juvenile justice. But at the same time, the degree of this heinous crime, is what wavers you. Yeah, So that's what makes you unbalanced a little bit. But in the debate. in general, trying to say that reduce the rate of the juvenile to 16 years. Yeah, you can't generalize something. Can't generalize. Whether you reduce it to 16 years, you mean to say 15-year-old cannot commit crime? They can commit crime. So it's basically, that is not the solution. The solution is not child versus woman. The solution It's a bigger is, debate. It's a bigger debate. Why is it even happening? Yeah, it's the education which is needed, major education which is needed for our children. Anyway, Hi Priyanka. last question. Hi. Priyanka, this is Jayanti. I just wanted to ask you कि आपने इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार किया है. Personally, I think I really, and doing this film more, मेरा newfound respect है for the police department. The kind of things that the police in this country has to deal with, the kind of disrespect they have to deal with, and also the kind of salaries they get. Like learning about this film and learning about everything, the life of a police officer and how much you have to fight really made me feel even more convinced that I wanted to play Abha. Thank you all very much. We do. There's a lovely thing coming up, which is the performance, the music. Just wait for that. Thank you everyone. Thank you for Well, being here. Now please wait for the performance, live performance of Sukhvinder. आ गए?